Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Let's start our today's lesson. Our today's topic is autofill feature. Students, what is autofill feature and how you can use this feature in Excel? Let's have a look. So in this video, I'm going to talk about how to use the autofill feature to quickly populate cells. So first, let's zoom in so you can see this better. Now, let's say if we write the name John and we wish to copy this entry, you can use the autofill feature by left-clicking that button at the bottom right and then extend it to how many cells you want to. And so you can do that. Now let's say if you want to copy a number, you can just type in number 5, click the button at the bottom right, and then drag it. And so you can copy it that way as well. You can also copy things horizontally just by extending it. And so that's one way in which you can use the autofill feature by copying a cell and extend it horizontally or vertically. Now, another way in which you can use Excel's autofill feature is with sequences. For example, let's say if I write the number 1 and then 2, and I want to go up to like 15. So what you need to do is you need to highlight these two cells, both cells, not just one, so Excel knows what pattern to continue, and then continue it, stretched out. So notice that there's a little button, a little number next to my cursor in red. You can see it says 5 and then 6. So that tells you where to stop. So if I want to go to 13, I will stop at 13. Now let's say if I want to go by threes, starting with 5. If I add 3 to 5, it's 8. And then after that, it's 11. So what I can do is highlight the first two numbers, click the button at the bottom right, and then extend it. And as you can see, there's a little number next to my red mouse, or the mouse highlighted in red. So I can stop at 29, I can stop at 35, or I can go all the way to 44. And so it tells you where to stop. Now let's say if I started with 7, and I want to go up by 6, the next number will be 13. I can also do this or expand it horizontally. And I can stop at 55. And so that's how you could use the autofill feature if you have an arithmetic sequence of numbers. Now let's say if we want a geometric sequence as opposed to an arithmetic sequence. In an arithmetic sequence, we're adding. In this case, we're adding by 2. So let's say if we want to extend this sequence, we can just do what we've been doing before. Now, instead of an arithmetic sequence, let's say if we have a geometric sequence where we multiply the previous number by 2. So 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16, and so forth. Well, if we try to extend it, we're not going to get the next number, 32. 16 times 2 is 32. So we need to do something different. Let's click the back button. Now, instead of left-clicking the button at the bottom right, right-click it, and then extend it. So initially, you'll get the same result, but notice that this thing appears, this window, so to speak. And instead of selecting a linear trend, what you want to select is a growth trend. And so as you can see, we get the geometric sequence that we want. 32 times 2 is 64, 64 times 2 is 128, and so forth. So that's how you can use autofill to extend an arithmetic sequence versus a geometric sequence. Now, let's talk about some other things that we can do. So let's get rid of this. Something else that we can do is we could extend the month of the year. So let's say if we have January, and we don't want to write February, March, April, and so forth. So left click the button at the bottom right, and you could extend it to anywhere you want. If you want to stop at July, you can stop here.
If you want to stop at October, you can stop there. Now you can also use the abbreviation for the month. So this time, I'm going to stop at December. And keep in mind, you can also do this horizontally. So I can start with May and then extend it to the right. And let's stop at November. And so that's one way in which you could use the autofill feature. Another way is for like quarters. So let's say if you have the first quarter and you don't want to write up to the fourth quarter, you can just extend it. Now there's only 4 quarters in a year, so there's no such thing as the fifth quarter. You could also do the abbreviation for this with Q1 and then extend it. Let's stop at Q4. So those are some ways in which you can use the autofill feature within Excel. Now you could also extend names associated with numbers. For example, let's say if we have the name Karen, and let's put a 1 next to it. We could expand that. Karen 2, Karen 3, Karen 4, and so it's going to follow the pattern. Now let's say if we have a math problem. So let me write the months of the year. Let's say if you put in $300. Now students, you have seen that what is autofill feature, how you can use autofill feature. Now autofill, very often we have to fill in a series of numbers, months or weekdays in a worksheet. Microsoft Excel has a feature called Autofill which quickly completes a series of data. It automatically continues a series based on a pattern you specify. ठीक है, आपने ऑटोफिल में कोई भी नंबर ऑफ़ सीरीज़, डेज़ ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर कुछ भी आपने ऐड करना है तो उसके लिए आप ऑटोफिल फ़ीचर यूज़ करते हैं. इसके अलावा आप ख़ुद से डिफ़ाइन किया हुआ डाटा भी ऑटोफिल में फ़ीड कर सकते हैं और ऑटोफिल फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप जो स्पेसिफाई करेंगे पैटर्न, वो उसी पैटर्न में ऑटोफिल फ़ीचर यूज़ करते हुए वो डिस्प्ले कर देगा. द सीरीज़ इज़ कम्प्लीटेड विद एब्रीवेशन ऑल्सो. इस सीरीज़ में आप एब्रीवेशंस भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन जैन इज़ यूज्ड instead of January, the series is completed with Jan, Feb, March, and so on December. The series can be created across rows and as well as columns. ठीक है, जो एब्रीवेशंस आप यूज़ करेंगे उन्हीं एब्रीवेशंस को यूज़ करते हुए वो ऑटोफिल फीचर उस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा. उसके अलावा आप ऑटोफिल फीचर्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में भी फिल कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में भी फिल कर सकते हैं. The fill handle, the most important thing in autofill feature that you can see in figure 1.9a. The fill handle. Fill handle is a small black square in a lower right corner of the cell that you can see in figure 1.9a that is circled in red. जो रेड में सर्कल हुआ है एक स्क्वायर, इसको कहते हैं फिल हैंडल. Fill handle can be used to copy the column or even rows to fill a data in series in consecutive cells. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें आपने इस फिल हैंडल को यूज़ कैसे करना है. 1.9c में आप पहले कोई भी सीरीज़ देंगे, सीक्वेंस देंगे. फॉर एग्जांपल मंडे और ट्यूसडे से एक सीरीज़ का पता चल जाता है कि आप कौन सी सीरीज़ ऑटोफिल में फिल करना चाह रहे हैं. तो मंडे ट्यूसडे से आप उसको सीक्वेंस देंगे. देन आप ये ब्लैक स्क्वायर को लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हुए नीचे जितने कॉलम्स में आपने इसको फिल करना है उतने कॉलम्स तक सेल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप उसको रिलीज़ कर देंगे माउस को. देन वो उतने ही सेल्स के अंदर उसको फिल कर देगा. दिस इज़ ऑटोफिल फीचर. नेक्स्ट देखें, मंडे ट्यूसडे सीरीज़ आपने सेलेक्ट की थी और डे संडे 7 सेल्स आपने सेलेक्ट किए. 7 सेल्स जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप माउस को रिलीज़ कर देंगे तो वो पूरी सीरीज़ ऑटोमेटिकली इसमें डिस्प्ले कर देगा डेज़ ऑफ द वीक.
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि ऑटोफिल फ़ीचर को यूज़ करते हुए आप एक तो मैजिकली सीरीज़ को फिल कर लेते हैं, इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है, ठीक है। दैट इज़ देर इज़ अ सीक्रेट यूज़ ऑफ फिल हैंडल, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लियर द कॉन्टेंट्स ऑफ अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल। इसका दूसरा फीचर ये है कि ये जितने भी कॉन्टेंट्स सेल या नंबर ऑफ सेल्स फिल किए हुए होते हैं उसके अंदर से इसको क्लियर भी कर देता है कॉन्टेंट्स को, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फर्स्ट में आपने रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट लिए जून टू दिसंबर, देन आपने उस पर क्लिक किया और ड्रैग करने के बाद आपने उसको रिलीज़ कर दिया माउस को। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में वो सारे कंटेंट्स जो थे वो डिलीट हो गए। तो दिस इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फिल हैंडल। नेक्स्ट, check your progress. This is your homework. You will have to do it on the book page given. Next, creating custom lists. Students, custom list series or a custom list is a set of data that is used repeatedly to fill a column or a row. It is also possible to create your own list of data that works with autofill. It can also be add data that you use frequently in a customized list. स्टूडेंट्स, कस्टम लिस्ट होता है कि आप कोई भी अपनी सी सीरीज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिपीटेडली आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपकी क्लास के, नेम ऑफ़ द सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बार बार जब आप एक्सेल के अंदर उनको यूज़ करते हैं तो टू सेव टाइम आप उसको कस्टम लिस्ट के अंदर डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर उसी तरह ऑटोफिल फ़ीचर के साथ उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपने कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, इसके लिए उसने यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल फाइल टैब में आप जाएंगे, लेट्स सी द फर्स्ट वन इज़ फाइल टैब। फाइल टैब को चूज़ करते हुए आप ऑप्शंस में जाएंगे, सेकंड लास्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप एडवांस्ड को चूज़ कर लेंगे। एडवांस्ड को चूज़ करने के बाद आप एडिट कस्टम लिस्ट, जो रेड में सर्कल हुए में एडिट कस्टम लिस्ट को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर आप देखें न्यू लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यू लिस्ट के साथ और भी लिस्ट कस्टम लिस्ट डिफ़ाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल डेज़ ऑफ द वीक है, संडे, मंडे, डेज़ ऑफ द ईयर्स हैं। तो आप अपनी कस्टम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद जो आप इस लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं मिस्टर अली, मिसेस खान, मिस्टर अदील, मिसेस शाह एंड मिस अरूज, ठीक है। आप ये लिस्ट ऑफ एंट्रीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, देन आप उसको ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वो आपके यहाँ पे कस्टम लिस्ट के अंदर यहाँ पे शो होंगी। देन आप इस कस्टम लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। देखें फिगर 1.10। 1.10 में जैसे आप मिस्टर अली लिखेंगे, देन आप ब्लैक स्केयर को ड्रैग चूज़ सेलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही कस्टम लिस्ट जो आपने क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर देगा। तो ये था स्टूडेंट्स कस्टम लिस्ट। नाउ there are 2 click times you will have to practice at home, and your homework is to do your exercise. I will share it with you, and if you feel any difficulty then you can ask me. Okay students, bye bye, take care, Allah Hafiz.